A very good afternoon to all friends. This is C. Sangam Agarwal, and I welcome you on behalf of Association of Professional in our today's ninth session of AOP on basically on live query resolution session. So, friends, as you know that we are doing this kind of session from last 2 months, and today is our ninth session. In this session, we generally try to take the query of all the professionals and discuss some latest issue with you so that all can knowledge can be enhanced for the all professionals and we all can give society service to society at best possible manner. So friend, due to some technical error today, we are unable to live on the Facebook. So we are live on YouTube today. So I will also share the link of this YouTube session on the Facebook. Those who are waiting for us on the Facebook can check session via this mode. So, friend, firstly, I will introduce you some session which we have already conducted last week. First thing, friends, as we all know that today is the last date for filing GST 9 and 9C. So, some of the our professional friends have a doubt that in which case this is last date. So, friends, the last date is for those in financially 18, 19 have a aggregate turnover is more than 5 crore. अगर किसी भी एसएससी की चाहे मल्टीपल जीएसटी नंबर की या सिंगल जीएसटी नंबर की टर्नओवर आपकी अगर 5 करोड़ से ज्यादा की है उस केस में आप पे जीएसटी ऑडिट अप्लीकेबल है और अगर एक जीएसटी नंबर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और बाकी जीएसटी नंबर की आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है उस केस में भी सारे जीएसटी नंबर पे ये जीएसटी ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा उस केस में आपको 9 एंड 9 से दोनों फाइल करने हैं जिसकी आज लास्ट डेट है आई थिंक फ्रेंड्स ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा अब एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं आपको जैसे आपको पता है पेनल्टी कि इन केस क्या पेनल्टी है अगर हम लोग 9 और 9 सी आज फाइल नहीं कर पाते जिन केस में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है तो फ्रेंड उस केस के अंदर हमारी 0.25% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर दिस इज लायबिलिटी एंड देयर इज अनदर पेनल्टी व्हिच इज 25,000 ईच एक्ट आई मीन टू से दैट 25,000 रुपए एसजीएसटी में 25,000 रुपए सीजीएसटी में दैट्स कॉल्ड जनरल पेनल्टी तो ये दो तरह की पेनल्टी पॉज हो सकती है अगर हम टाइमली अपनी 9 और 9C फाइल नहीं करते तो दिस इज टू थिंग व्हिच आई मेनली वांट टू डिस्कस विद यू इन टुडेस this live session. So friends, apart from this, I will let you know about some of the session we have conducted last week. On last Monday, we have conducted a session with CA Tarun Arora on which we have discussed the about input tax credit under GST and their reversal. So we have discussed in detail. So friend, that session is also available in our YouTube channel. You can go and watch that session. Apart from that, we have discussed a session with CA Deepak Goyal on last Sunday, in which we have discussed about the allowability of education cess. So we have discussed in detail about what acts say, what the legal framework says. So somehow we concluded that education cess is allowable expenditure. While we compute our income tax computation, we should take as a in our income tax computation we should take as a expense of education cess and it is allowable as per income tax act. Apart from that, we have also conducted one session with Mr. Shahid Ali. In that we have discussed about the advocacy of the fire insurance and the claim management. We have discussed and in detail. Apart from that, we have conducted one session with CA Kapil Goyal. In that session, CA Kapil Goyal ji discussed about how to draft the how to draft the replies of income tax notices, different income tax notices in the especially in faceless proceeding. So that session is also available on our YouTube. Apart from that, friend, we have also represented to Ministry of Finance for the extension of due date of 9 and 9C for financial 18-19. We have submitted a letter to them, and somehow we are hopeful that today a notification will come in which the date will be extended. And apart from that, friends, as we know that earlier today is the last date for paying the membership fees of ICI also. For that, we have also returned to the president of ICI that the date should be extended. And yesterday itself, the date had been extended to 30th November. But somehow we are all are required to make our login at SSP portal. And by using that portal, we are required to pay our fees. And there is no other way of paying the fees. We have to go to through SSP portal only. So now the due date of membership fees is for financial year 2021 is 30th November. So I request you all kindly pay your fees on time so that your name will not remove from the register of member and you're not required to go into the long process of restoration of membership and other things.
So friends, this is from my part. I will also come back again. So firstly, I will welcome CA JK Chaudhary sir to joining us today on this platform on this session to discuss some of the very important case law recently given by the ITT and other respectable authorities. So he will discuss about the latest case laws which are very important in our day-to-day assessments and framing our opinion. With this note, I over to C. J. Chaudhary sir. So kindly unmute yourself. Thank you, Sangam. Yes. Today I'll refer some of the recent case laws in direct taxes. So there are some very important judgments which has come during this last month. So first judgment is Mrs. Religare Finvest Limited. So this company is a subsidiary of Religare Enterprise Limited, and there is another subsidiary of Religare Enterprise Limited, which is Religare Securities Limited. So that Religare Security Limited gave loan to Religare Finvest Limited. So these companies which are subsidiary of one company is holding, that is Religare Enterprise Limited, and other two are Religare Finvest Limited and Religare Security Limited are both subsidiary of the holding company. So these companies are called fellow subsidiaries. So the loan was given by Religare Securities, that fellow subsidiary, to Religare Finvest Limited. So you are aware that there is a section 222E, that deemed dividend. So the assessing officer invoked section 222E and wanted to actually tax that amount as a deemed dividend. So CIT appeal also agreed with the assessing officer, but they went to the ITAT, Delhi. So ITAT held that in this fellow subsidiary, this Religare Security Limited don't hold any share. Religare Finvest Limited don't hold any shares in Religare Securities Limited. The shares are held by Religare Enterprises only. So since there are no share held by the company to whom loan has been given, so in this case, this deemed dividend will not be valid. Otherwise, you know that there is a limit of that minimum shareholding should be 10%. So normally in income tax they say directly, indirectly. So I have received so many queries from our chartered accountants that whether this loan by one fellow subsidiary to other fellow subsidiary will be attracting this deemed dividend section. So in this case, the Delhi High Court, Delhi Tribunal has opined that there won't be any deemed dividend. So, and this is actually there is a lot of confusion on this deemed dividend because in department they even try to tax the loan given by holding company to subsidiary. So I was getting one assessment done earlier. So the assessing officer said that whatever loan the holding company has given to the subsidiary company, that will come under this deemed dividend. So I said that where is the question of deemed dividend when there is no holding there. But in this case, everybody has a doubt because the holding company had stake. So this judgment is very important that way. There is another ground in this judgment, which was regarding stock appreciation rights. So basically, stock option scheme was announced by the company, and there was some
loan was given to a trust, and that loan has to be written off because the benefit was passed on to the employees. The assessing officer felt that it is a capital expenditure, whereas the assessee claimed it as a revenue expenditure. So tribunal decided in favor of assessee that this is a revenue expenditure and the expenditure was allowed. The another judgment is Ritesh Properties and Industries Limited. This is a very important and very unique kind of case. Here, the company has revised the financial statements and filed a revised return along with the revised statements. So this revised statement, the financial statement rule had come only in 2003 or so. So prior to that, there was no provision in company law for the revision. So this may be the first case of this kind. So in this company, what happened? The company had actually had a sale agreement with another company for sale of land for 9 crore. So that amount was taken as a sale in the accounts. Later on, that agreement was cancelled, and they were advised that you will revise the accounts and actually reduce the sale. So the auditor of the company also did not agree with the revision, and it was commented that this revision is not in order. But this revision was done in accordance with the MCA circular. So the tribunal held that the revision was valid and this reduction was allowed. Then the other case is that Red Fort Shah Jahan Properties Limited. So in this case, the question was whether you are following the accrual basis of accounting. So the company has given a loan, and on that loan, the interest was accrued. So the company has claimed that even the principal amount is not likely to be recovered. So how we can actually accrue the interest on that? So tribunal agreed with the assessee that if the principal amount is in jeopardy, then there can't be accrual of interest, because if your principal is not secure, then how you can have the interest accrual? So normally we find that whenever you go to assessing officer or even you are doing the audit, so we say that income has to be accrued whether the amount is recoverable or not, unless it is written off. So this is also a very important judgment, which gives a principle that if your principal amount is not recoverable, then the loan will not be treated as. Then there is another judgment, Optum Global Solutions Private Limited. This is regarding Section 10A. The assessee has claimed that Section 10A is exemption is available on interest earned, which is part of business profit. So the assessing officer obviously said that it is not an operating income and interest is other sources and all that. So similar problems we have been facing in ATHSC, so many sections. So here also the tribunal agreed with the assessee, it is in favor of assessee, that interest is a part of business income
and the exemption under 10A is available. There was another point. There was a notice pay recoveries from the employees in this case. That also the assessing officer has said that it is not part of 10A because this is not operating income and it is other sources or something, and it is not allowed as an exemption. You have to pay tax on that. So here also the tribunal agreed with the assessee, and this was allowed as a part of business income, and the 10A exemption was allowed. So these are the major decisions during this period. Thank you very much. So thank you very much, J.K. Chaudhary sir, for giving some important case law. Case law are very important nowadays because somehow as the assessment is going to be faceless, so keeping all these things in mind while filing returns and replying the notices under faceless assessment. So thank you very much for sharing this important judgment with us. So friends, as you know that friends, from tomorrow onwards, some TCS provision are going to be applicable as introduced in Finance Act 2020. So friends, there are three important TCS provision which is going to applicable from tomorrow onwards. I'm just giving you overview of that. And yesterday one clarification is also issued by the CBDT on that. First provision is basically for the sale of goods. So when keep in mind these services are not applicable. It is on the in case of sale of goods. In that case, if you're in previous financial year, your turnover is more than 10 crore, then such provision is applicable on you. And if you make any sale of more than 50 lakh rupees, in that case, you are required to collect 0.1% TCS along with your sale consideration, and you have to deposit that. So, friend, in yesterday clarification, one point comes that if this 0.1% is applicable including GST or excluding GST. So yesterday it has been clarified by point number 4.6 of clarification that it is including GST. कि आपको जो भी टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1% वो जीएसटी को मिला के करना है. फॉर एग्जांपल आपका 60 लाख रुपए का बिल है, उसमें 5 लाख रुपए का जीएसटी है, तो जो टीसीएस एप्लीकेबल होगा 0.1% और 65 लाख रुपीस के ऊपर एप्लीकेबल होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फ्रेंड्स, जो हम इनवॉइसेस 1 अक्टूबर से पहले इशू कर चुके हैं उनकी पेमेंट 1 अक्टूबर के बाद अगर हमें रिसीव कर रहे हैं तो उन सब पेमेंट्स के ऊपर भी आपका टीसीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे. तो देन दिस इज ए वेरी क्रूशियल पॉइंट. समहाउ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं थी पहले, तो क्लैरिफिकेशन कल ही इश्यू हुई है कि अगर आप सेल 1 अक्टूबर से पहले कर चुके हैं और उसकी पेमेंट आपको 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हो रही है, तब भी उन पेमेंट्स के ऊपर टीसीएस आपको कलेक्ट करना है और जमा भी करवाना है. तो फ्रेंड, तीसरा इसमें पॉइंट है कि अगर आपने एक बार एक इनवॉइस काट के आपने सेल कर दिया, बाद में आपने कोई क्या किया, आपने कोई डिस्काउंट दिया, कोई इंसेंटिव दिया या कोई सेल रिटर्न हो गई आपकी, तो फ्रेंड उस केस में आपको टीडीएस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी है, उस टीसीएस को कोई भी आपको चेंज नहीं करना है. तो फ्रेंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सेल रिटर्न वाला पार्ट है वो बड़ा इंपैक्ट होने वाला है इससे, बिकॉज इन केस ऑफ गुड्स सेल रिटर्न इज वन ऑफ द वेरी कॉमन सिनेरियो इन इंडस्ट्रीज. तो गवर्नमेंट को इस वाले पार्ट को थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था कि अगर हम टीसीएस अगर सेल रिटर्न हो जाती है तो उस केस में हम टीसीएस को उसकी आने वाली पेमेंट से या फ्यूचर पेमेंट से एडजस्ट कर सकें जो पेमेंट्स आनी है. तो माइट बी लेट्स सी कि हाउ गवर्नमेंट टैकल दिस, बट एज पर यस्टरडे क्लैरिफिकेशन इट इज क्लियर दैट कि आपको कोई भी डिस्काउंट, इंसेंटिव या सेल रिटर्न को कंसीडर नहीं करना है. आपको उसके अंदर आपको उनको इग्नोर करना है और 0.1% आपको ग्रॉस अमाउंट पे आपको चार्ज करना है. तो फ्रेंड ऐसे ही इसके अलावा हमारा एक प्रोविजन और है, दैट इज फॉर बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस. तो फ्रेंड उसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई भी आप 7 लाख रुपए से ऊपर की फॉरेन रेमिटेंस करते हैं इंडिया से बाहर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को डाउट है इसके अंदर. तो फ्रेंड ये जो सेक्शन आया है बेसिकली, ये स्पेसिफिकली जो सेक्शन जो आया है ये सिर्फ LRS के लिए आया है, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, जो आपकी आरबीआई के अंडर LRS स्कीम होती है, जिसके अंदर हम लोग अराउंड आई थिंक $1 लाख पर एनम ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया से बाहर. $2.5 लाख हम जो ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया से बाहर, उस वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगा. इसके अलावा अगर हम कोई और पेमेंट करें जो LRS में कवर नहीं होती तो उस पे ये टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. और फ्रेंड उसके अलावा उसमें सम एग्जम्पशंस और दे रखी है. अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपने फिर आपने रेमिटेंस करी, आपने 2-3 उसमें एग्जम्पशंस और है, पर मेनली हमें ध्यान रखना है कि जो LRS की जो पेमेंट है उन्हीं पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे.
अदरवाइज उस पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर मैं एक बात तो आपको बताना चाहूंगा, इन टीसीएस के प्रोविजन के अंदर आपका अगर टैक्स किसी और सेक्शन में अगर कट रहा है आपका, तो उस केस में आपको ये टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मोटर व्हीकल, जब एक मोटर व्हीकल का डीलर जब कोई गाड़ी बेचता है, तो उस केस में क्या करता है, सिर्फ गाड़ी बेचता है, उससे टीसीएस कलेक्ट करता है उससे, बट लेकिन उसका अपना कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होता, बिकॉज जब वो कंपनी से गाड़ी खरीदता है। ओके, तो बिकॉज वो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टॉक इन ट्रेड है, जब उसने कंपनी से गाड़ी खरीदी, अगर उस केस में उसका मोटर व्हीकल वाले सेक्शन में टीसीएस नहीं कट रहा, तो 206(1)(h) के अंदर उसका टीसीएस कटेगा। इनकेस अगर वहां पे उसका टीसीएस कट रहा है अगर, तो फिर 206(1)(h) के अंदर उसका टीसीएस नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी प्रोविजन के अंदर टीडीएस कट रहा है या टीसीएस कट रहा है, तो फिर आपका ये जो जनरल सेक्शन है ये आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड, इसके ऊपर हमारा एक तीसरा सेक्शन है हमारे पास, जो बात करता है ई कॉमर्स की, बेसिकली कि आप क्या करेंगे, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो 5 लाख रुपए से ऊपर की जो सेल कर रहे हैं वेंडर, जो से सपोज करो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई भी वेंडर रजिस्टर्ड है, उसने अगर 5 लाख रुपए से ऊपर की सेल करी और फ्लिपकार्ट उसको अगर पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में वो उसका टीसीएस काट के जमा कराएगा, और वो टीसीएस गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा और उसका एज ए एडवांस टैक्स उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो फ्रेंड, हम वी आर आल्सो प्लानिंग इन कमिंग वीक कि हमको एक फुल फ्लैश टीसीएस के ऊपर जो भी टीडीएस के अंदर अमेंडमेंट्स आई है, इनके ऊपर एक सेशन करें, फुल फ्लैश सेशन करें। उसमें आपको हम पूरा ब्रीफ बताएंगे आपको इन सब अमेंडमेंट्स के बारे में, क्या इनकी क्लैरिफिकेशन है, क्या हमारे व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, इन सबको कंपाइल करके। अभी आज मैंने आपको मैंने बहुत ब्रीफली आपको ओवरव्यू दिया है सब चीज़ों का, बट वी आर प्रिपेयरिंग ए सेशन ऑन दिस, and soon we will come up with a complete session. Joseph, do you want to say something, sir? Joseph, sir? No, I think Okay. that's all. So friends, as you know that today is also last date for financially 18-19 ITR. So I think it is you all are aware. तो इस समय एक पॉइंट और बड़ा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, जो रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी सीबीडीटी ने बहुत सारे एसएससीज को जिन्होंने फाइनेंशियली 18-19 की आईटीआर भरी है और या फिर नहीं भरी है, उनको कुछ एसएमएस आ रहे हैं ई कैंपेन के थ्रू कि हमारे पास आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है और आपने अगर रिटर्न नहीं भरी है, रिटर्न भरी तो उसमें आपने दिखाया नहीं है। तो फ्रेंड, इस चीज को हम कैसे टैकल करें? तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस तरह की ट्रांजेक्शन है। अगर उनकी भी अब तक आईटीआर नहीं भरी है, तो हमें उनको देखना है कि आज उनकी आईटीआर भर दें। और फ्रेंड, अगर वो कोई ऐसी आपको लगता है कि वो कोई प्रॉपर्टी परचेज की ट्रांजेक्शन है या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है कि आपका अगर उस केस में लॉस है या आपकी इनकम मिनिमम जो आपकी लिमिटेड 2.5 लाख रुपए से उससे कम है, तो फ्रेंड उस केस में मेरी पर्सनली एडवाइस है कि हमें उस केस में भी आईटीआर भर देनी चाहिए। बिकॉज क्या होगा, उनका सिस्टम अगर मैच करेगा, रिटर्न है, तो देयर इज लेस चांसेस कि उनका केस स्क्रूटनी में आएगा या फर्दर कोई नोटिस इशू होगा आपका। और जब हम वो रिटर्न भरेंगे तो वो चीज का प्रॉपर डिस्क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैंने मकान परचेज किया 50 लाख रुपए का और मेरी इनकम 10 लाख रुपए साल की है, तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपने 10 लाख रुपए इनकम के 50 लाख का मकान कैसे खरीद लिया। अगर मैं उस केस में अपनी बैलेंस शीट फिल करता हूँ उसके अंदर, या फिर एक अलग से शेड्यूल होता है, एसेट लायबिलिटी शेड्यूल, एएल शेड्यूल, अगर मैं वो एएल शेड्यूल भर दूं उसके अंदर और उसमें वो प्रॉपर्टी मेंशन कर दूं, तो सम टाइम क्या होगा, वो डिस्क्लोजर मेरे पार्ट पे कंप्लीट डिस्क्लोजर हो जाएगा। तो कल को इनकेस मेरा अगर स्क्रूटनी में मैटर आता भी है, तो इट विल वेरी क्लियर कि मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया डिपार्टमेंट से, जो भी ट्रांजेक्शन करिए इट एवरीथिंग इज इन द रिटर्न। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो एक बेस बनता है आपके आगे आने वाली असेसमेंट का। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जिन लोगों को मैसेज आ रहे हैं, ई कैंपेन ईमेल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, अगर उन्हें अब तक आईटीआर नहीं भरी तो आईटीआर भर दें, और अगर आईटीआर भर चुके हैं वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई, तो अपनी आईटीआर रिवाइज करके उन ट्रांजेक्शन को दिखा दें। अब फ्रेंड, मैं आपको एक बात तो बताना चाहूंगा कि इससे पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। जैसे हम सबको पता है कि अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है, तो उस पर फ्लैट पेनल्टी है आपकी 1000 रुपए की 271F के अंदर। बट हमारे अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो उस केस में हमारी पेनल्टी है 10,000 रुपए की। तो फ्रेंड, आपका क्वेश्चन आएगा सर, जिसपे 2.5 लाख रुपए से कम जिसकी इनकम है, जो एक्चुअल में लायबल नहीं है, तो फ्रेंड वो उसी कैटेगरी में फॉल करेगा जिसकी इनकम 5 लाख से कम है। तो उस केस में भी आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी रिटर्न फाइल करने के लिए, इवन द टैक्सेबल अमाउंट इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज। बट फ्रेंड, इससे क्या होगा कि देयर इज ए लेस चांस कि आपका कोई स्क्रूटनी में आएगा केस, और दूसरा क्या होगा कि देयर इज ए गुड चांसेस कि आप अपने मैटर को आगे जस्टिफाई कर पाएंगे फेसलेस असेसमेंट में, जब भी आपके मैटर ओपन होते हैं। As per my personal experience, now department are opening scrutiny based upon the information available with them, like a high value transaction which comes through annual information report, SFT 61A, like these are the forms by which they are getting the informations. So अब जो भी स्क्रूटनी आपकी होगी फेसलेस होगी, वो इन्हीं इंफॉर्मेशन बेस्ड स्क्रूटनी होगी, रेंडमली आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी। तो बेटर है कि अगर आप डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो अगर हमें पहले ही वार्न कर रहा है उसके, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को अपनी रिटर्न में कंसीडर करें और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें।
तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा, हाँ सर, इसमें 26 एएस में भी अभी काफी इंफॉर्मेशन आ रही है ना, यस यस, तो दैट आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया सर कि अब रिसेंटली 26 एएस भी अमेंड हो गया है और बहुत सारी म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन, काफी ट्रांजेक्शन 26 एएस में आ रही है। तो आप अपने आईटीआर फाइल करते हुए 26 एएस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको प्रॉपर्ली वॉच करें और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कहीं ना कहीं रिटर्न में जरूर कंसीडर करें उसको आप। Okay. So friends, soon we will meet again to discuss the provision of TCS, and somehow we are also planning close by close discussion on the tax audit. So soon we will have a session on this also, close by close discussion on tax audit. So with this note, I am concluding today's meeting because somehow other professionals are also engaged in tax audit and other works. So soon we will organize two important provisions sessions on these two topics. With this note, I express my sincere thanks to Chaudhary sir to come on this session and our entire participants. Friends, again, I'm saying due to some technical error, we are not able to join, share the link via Facebook. So we are joining through YouTube today. I will share the link of YouTube at Facebook. With this note, thank you very much. Thank you. Thank you.